Okay. So see, I hope you remember we had started with chapter number 1, an introduction of life insurance, and we had only few lectures, like 2 or 3 lectures till now. So a bit of chapter is over, half I mean, and another part we will complete it today itself. So see what all we have covered, just an idea about the last lectures that we have been covering with introduction to life insurance is introduction. Okay, and we have also covered definition, nature of life insurance. Yes, then essential features, very, very important. Okay, next was advantages of life insurance and some components of life insurance like death benefit, encourages enforced thrift, cash value component, beneficiary, readily marketability, ready marketability, accidental death benefit, tax benefits. So all of these are the components of life insurance. How it works, I already told you, just not, don't go in detail of how it works, but then you need to see the components like human life value. I told you with an example of Mr. Rajan who earns 1,20,000 a year and spends 24,000 on himself. So 96,000 would be his family income, no? So, hmm, so according to that, suppose rate of interest is 8%. So 96,000 divided by 8% is 12 lakhs. So this is the policy amount that he would get. Or at the event of his death, the family would get to 12 lakhs rupees. Did you get that? Did you remember? Yes, ma'am. Yes. So risk component is also divided in 3 parts: dying too early, living too long, and dying living with disability. Level premium was also a concept that we covered in the last lecture. Principle of risk pooling, mutuality. Now we will start with life insurance contract. Very, very important. Just 2 minutes. Huh? Hold on for 2 minutes. Okay, students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, see, life insurance contract now. This is, remember, this is life insurance contract. So anything which is related to life insurance will be covered here, okay?
Now there are some principles that you need to follow for life insurance. So suppose when you go to company, okay, say for example LIC, Kotak Life, okay, Birla Sun Life. These are the companies that offer Bajaj Alliance. So these are the companies which offer a variety of life insurance policies and schemes. Okay, so when a customer goes there, they are asked to follow some principles and rules that are stated under Insurance Act 1938. Okay, now what all principles are there in that particular contract? I hope you guys are well aware about the word contract. What do you mean by contract, students? Students, what do you mean by contract? A legal agreement between two parties. Yes, the agreement between two parties. So when I say agreement between two parties, so what do you mean by that? Agreement means that some things and decisions will be taken based upon the mutual consent of both the parties. Some decisions will be taken upon mutual consent of both the parties. Consent means permission. So when Mr. A says something, Mr. B has to agree on that. And if Mr. B is taking some decision, Mr. A also has to agree on that. So that becomes a contract. When it comes on paper, contract should be in the written format. It should be written on some legal paper, and then sign is there, stamp of the company is there. Only then it becomes valid. Okay, otherwise it becomes null and void. So now when I say life insurance contract, so in the contract, there are some principles and rules that you need to follow. So, 1 minute. Oh, just a minute. Huh? Students, just wait. I have shifted my mode of the lecture. So just 1 minute. Yes, so I'll be sharing my screen once again. Yeah, is it visible? I've clicked some pictures. My document is not getting loaded. Students, the picture is visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, let's see.
This is the first principle that in the contract both the parties have to follow, and the first amongst them is utmost good faith. I've already told you in the benefits that this is one of the fundamental principle that an insurance contract has to include. It means that every party of the contract shall disclose all the material facts. What do you mean by material facts? Important facts. That means if a company has to disclose anything related to the contract, then it is supposed to do that. And then if customer has to disclose anything about its health issues, history or medical history, anything related to its life, so a customer is bound to supposed to enter any each and every detail regarding his health or any issues to the company. So that becomes your utmost good faith. That means you are not supposed to hide anything from the company, and same for the company. Company also cannot hide anything from the customer. So that basically means utmost good faith. There is a simple example which is given here. See, read out the example. David made a proposal for life insurance policy. At the time of applying for the policy, David was suffering from David was suffering and under the treatment of the diabetes. So he was a diabetic patient, students. Okay. So the company, when they were issuing the policy without investigation, few years down the line, David health terminated and he had to hospitalized. He could not recover and died in next few days. The claim was raised on the insurance company, but company rejected the claim. Why? Why they rejected the claim? Because David did not let the company know about his health issues, that he was already suffering from diabetes. So when family came and family was claiming the amount of life insurance of Mr. David, company rejected the claim. Why? Because company, when they underwent the investigation part, insurance company came to know that he was already suffering from diabetes. Do you understand the concept? Yes, ma'am. Now, because Mr. David did not let the company know about his health issues, and therefore that contract was declared as null and void. What do you mean by null and void? The contract does not stand, as valid contract. The one which does not stand as a valid contract becomes null and void. Do you understand what is null and void? Yes, ma'am. Null and void means अभी वो कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा. अब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया था, द अमाउंट दैट कंपनी वाज सपोज टू पे एट द डेथ ऑफ मिस्टर डेविड, now company will not be paying the amount. Why? Because Mr. David did not follow the principle of utmost good faith. That means he was not true to the company. He cheated on the company. Got that? Got that? Yes, ma'am. Okay. Now these are some examples. One more time, there are few examples related to utmost good faith of life insurance, in the case of life insurance, in the case of fire insurance, in the case of marine, and in the case of motor. Okay. So just read on. This is not so, important. So therefore, I am moving to the next next page, and that is next point, which is insurable interest. Now, what do you mean by insurable interest, students? What do you mean by insurable interest? I already told you in the last few lectures. What do you mean by that? See, suppose I'm getting my husband's life insurance. So I have interest in his life, no? If I'm getting my parents' life insurance, so I have interest in the life of my parents. Similarly, when I'm getting insured, when I'm getting my home insurance, so I have some interest, I have valuable, interest in my home. Therefore, because I have some interest in my home, in the life of another person, etc., so I'm getting their life and
the commodities insured, so that any risk which is occurring in the future will not cause me the financial loss. I will not have to suffer a huge financial loss at the event of risk, which may happen in the future. May happen, no? Home insurance, fire insurance. So when fire will occur, so it is not compulsory that definitely fire is going to occur at your home. Students, is it clear? So that may happen. So at that spot of time, the loss should not be that huge that you are not able to tolerate the loss. Okay. Therefore, you are getting it insured, and that is known as insurable interest. Okay. Now see the example. Mr. Chandrasekhar owns a house for which he has taken a mortgage loan of 15 lakhs from bank. So does he have an insurable interest in houses? Yes. उसको खुद के घर के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं है? 15 लाख का लोन लिया ना, तो कल को मिस्टर चंद्रशेखर के घर में आग लग जाती है. सो व्हाट ही विल बी डूइंग? He will be asking insurance company to pay the amount, and only then that same amount will be paid by Mr. Chandrasekhar to the bank for repayment of the loan, because he has taken loan, no? Even if he's not taking any amount of loan, he's paying all the money by his own, from his own pocket for buying a house. So tell me, don't you have any interest in your house? You will let it burn. Students, yes or no? No, ma'am. Yes. So you will not let it burn. You will try to save your house. But even if you're not, after hard try, you're not able to save your house, then insurance company will be able to claim. Insurance company will be paying a good amount of money to you so that you do not suffer financial losses in the future. Okay. So that at least you can buy another home. Okay. Next is proximity cause. Proximity cause is the near cause, the nearest cause. So what do you mean by nearest cause? So suppose if I say the house is burnt by the fire. Suppose this is just an example, okay? So house is burnt by the fire. So what was the reason of the fire that attracted the house? Okay. Now tell me, what was the reason of bursting of the fire? Suppose short circuit. So because of short circuit, a particular area of the house was burnt. Okay, so proximate cause means the nearest reason of the risk that occurred at that particular point. So company is going to check with some reasons and they are going to get some output. They are going to get some results of that. So how did this fire occur? Okay, am I clear with the concept? Proximate cause, I told you with the example. So suppose if accident occurs, okay, now you are claiming your mediclaim insurance, accident insurance. So any type of insurance which is related to accidental cover. Now company will check all the details related to that particular accident. How did it take place? When and what, place did this accident take place? So everything, proximate cause means ये कैसे हुआ, इसका रीजन क्या था? दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, सिग्नल पे टक्कर हो गई. So this is proximate cause. मतलब नियरेस्ट आपका रीजन क्या है, किसकी वजह से हुआ? Students, getting my point? Come on, you need to quickly answer, guys. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Next is indemnity. Now, students, always remember, what is indemnity is only followed in general insurance, not in life insurance. Indemnity cause. क्या बोलते हैं इसको? पहले बोलो मेरे पीछे. Repeat after me. Indemnity cause. क्या बोलते हैं? Indemnity cause. Indemnity. Okay. Now listen.
Indemnity is only followed in general insurance, not in life insurance. This is very, very, very important concept. And it can be also asked in MCQs. That indemnity is followed in only general insurance, not in life. So I will ask, indemnity is followed only in dash and not in dash. So you need to, select correct of the 4 given options. So now let me tell you with example what is indemnity. First, I will tell you example, and then you can read out the lines which are given in the textbook. Then you will understand. Now, because it is not in the life insurance, I will not tell you the example of life insurance. Instead, I will tell you the example of general insurance. Let me take an example of car insurance. Is that okay? Car, motor, vehicle insurance. Okay. So that covers everything: car, two-wheelers, motorbike, etc. Okay. So vehicle insurance. So when I say I took 1 year car insurance, vehicle insurance. So suppose during that 1 year, in the given period of that 1 year, accident occurs and my car is damaged. Okay, my life is saved, but the car is damaged. Now I will go to company, I will claim my money, and company is going to, check all the details, whether the case is, true and fair. कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, खुद ही डैमेज तो नहीं कर दी कार. You're doing it deliberately, you're not going to get even a penny from the company. Let me tell you that. But if it is going to be in the natural way, if the car is damaged by its own, with some natural incident that has taken place, like an accident, so because your car is damaged with the natural incident, so your company is going to pay your claim amount. Now, what did I say in this? If the risk is going to occur, if the damage is going to occur with the car, only then the company is going to pay. Okay. Now, when I say in the given period of that particular 1 year, when nothing happens to your car, nothing happens. Okay. Your car is fine. It's going well. Okay. Nothing, no damage has been caused to the car. No accident occurred. Achhi baat hai. Nothing happened. So what will you do? You go to company at the end of the year and asking for refund of the premium. Students, tell me, will you ask company to pay you back the premium amount? No. You cannot do that. That amount will never be paid back to you. That belongs to company now. Company had taken the risk, no. If the loss will occur, company is going to pay you. If the loss will not occur, you cannot ask even for a penny that you have paid to the company. Not even a penny, students. You are paying premium of be it 4,000, be it 5,000, be it 40,000. You cannot ask to pay it back to you. That amount is lost. So this indemnity bond, इसको बोलते हैं indemnity bond. Bond means contract. मतलब आप ना इधर साइन करते हो अपने इस पे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पे कि अगर लॉस होगा तो ही कंपनी पे करेगी और लॉस नहीं हुआ तो कंपनी पे नहीं करती है. तो आप नीचे साइन करते हो, ओके आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन बिलो. आ रही है बात समझ में? ये लाइफ इंश्योरेंस में क्यों नहीं होता? क्योंकि डेथ इज समथिंग विच इज सर्टनली गोइंग टू टेक प्लेस इन एवरीबॉडीज लाइफ. डेथ तो आनी है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो 4 साल के बाद, नहीं तो 40 इयर्स के बाद, नहीं तो 80 इयर्स के बाद. डेथ तो आनी है. तो इसीलिए जब लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड यूज नहीं होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, I need your answers. Yes, ma'am. Okay. So indemnity bond. Now, a simple example is given below. Ram has insured his house worth rupees 10 lakhs for full amount.
He suffered a loss of an amount of fire estimated at rupees 70,000. So insurance company would pay 70,000 to him. बाकी का क्लेम वो नहीं कर सकता क्योंकि घर कितने का था 10 लाख का. How much, how much was the house burnt? Only for the value of 70,000. मतलब थोड़ा सा घर जल गया था ना, तो थोड़े से का ही वो he can claim. Rest of the amount he cannot claim because नुकसान हुआ ही नहीं. So indemnity bond will come into play. Okay, getting my point now. What do you mean by indemnity bond? Is it covered in life insurance? Yes. Is it covered in life insurance? No. Okay. So this can be asked in MCQs, remember. My next point is, next principle is subrogation. Now, what do you mean by subrogation? Subrogation means transfer of all rights, all the rights. Now, suppose, let me give you one more example. I have taken a car insurance and during a given period of 1 year, the car is damaged. Just an example to make you understand what is subrogation. So what happens when car is damaged? You will go to company. The company will investigate all the facts. Now they will come to a conclusion that yes, the event, the situation and everything, that every detail which has been given by the client is true and fair. So what company will do? They will reimburse all the losses that you are suffering from the damage of the car. Okay, company will pay you back the money, which is because of the amount of loss that you are suffering because of the damage of the car. The company will pay you back, but on one condition. एक शर्त पे. कौन सी शर्त लगाती है कंपनी? कब पे करती है आपको पूरा क्लेम? कार के इंश्योरेंस का जब आपको टूटी फूटी जो डैमेज्ड कार होती है ना, वो आपको कंपनी को देनी होती है, ट्रांसफर. दैट मीन्स वो टूटी फूटी कार को आप बेचकर रद्दी के भाव में जो पैसे निकालने वाले हो ना, वो इलीगल हो जाएगा. मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा चाहिए और टूटी फूटी कार को भी स्क्रैप वैल्यू में बेचकर वो भी पैसा आप ही रखोगे. So that is illegal. Why? Because there in the contract, subrogation plays a very important role. What do you mean by subrogation? That you need to transfer all the rights and remedies to the subject matter of the insurance. किसको transfer करना है? Insured. Oh, sorry, insurer. Who is insurer in this case? Company. ठीक है? मतलब वो जो डैमेज्ड कार है ना, आपको तो पूरे पैसे मिल गए डैमेज कार के. अब तो आपको रिकवर हो गया ना, अब तो आप नई कार खरीद सकते हो. तो वो जो डैमेज्ड कार थी, दैट यू नीड टू ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी. नाउ इंश्योरेंस कंपनी विल सी व्हाट हैज टू बी डन विद द डैमेज्ड कार. बेचकर कितना पैसा निकालना है वो कंपनी देखेगी, आप नहीं देखोगे, क्योंकि कंपनी ने तो आपको पैसे दे दिए. अब वो डैमेज्ड कार किसकी हो गई? कंपनी की हो गई. Did you get that? जल्दी बोलो, समझ में आया? अनम्यूट करो. Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हो गया. मतलब ये सब्रोगेशन लास्ट था. लेट मी जस्ट go through with all the points once again. Utmost good faith, both the parties should be faithful to each other. Next was insurable interest, that you have some interest in somebody's life or some property and therefore you are getting it insured. Okay, next was proximity cause. Proximate cause means the nearest reason, the nearest cause of particular event that has occurred and because of which you are suffering losses. Indemnity, that means it only occurs in general insurance. This bond exists in only general insurance and does not exist in life. Why? Because in life insurance, death is certainly going to take place. Okay, and in general insurance, if that event will occur,
the company will pay back your losses. That is known as indemnity bond. And last point was subrogation, which means transfer of all rights when such event will occur. And you have to transfer all the rights to the company. Okay, so this was the last point, and we have covered life insurance contract principles. Okay, just 1 minute. Yeah, just 1 minute. I will share the document once again. Hold on for a minute, students. Yeah. So I hope I'm audible and my screen is visible once again. Yes, ma'am. Students, am I audible? Yes. Yes, students, am I audible? Yes, ma'am. But you are not audible to me. 1 minute, 1 minute. Yeah, sorry, my voice, the speaker was at the lowest mode. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so subrogation was the last point. Now let us begin with determinants of risk premium. Now, students, what do you mean by determinants? What is risk premium, first of all? See, suppose company is taking your risk, no? Company is taking your risk for the future. So therefore, because company is taking the risk, therefore you will have to pay something to the company, and that something is known as premium. So what are the factors which determines, premium amount? How company is deciding the amount of the premium? Based on the risk factor. Suppose risk is more, premium will also be more. Suppose risk is less, so premium will also be less. But on what factors the premium amount is to be considered? How will we know the risk is more or less? So based on these things. Now suppose your age is, you're too aged person. Suppose you have crossed 45 years. So chances of getting, infected with diseases, different diseases is more. Whereas if you're young, below 18 or from 18 years to 45, between 18 and 45 years of age. So your age is assumed to be very, you are assumed to be very healthy, very fit, you're very young, and therefore the risk of your life is very small. Therefore, premium will also be very small. Are you getting my point, students? As you grow older, you may become prone to major diseases. You may become. So you will have many major health issues also. Okay. So because of these, factors, the age factor, the risk is decided. So the people who belong to the younger age will, are assumed to have less amount of risk, and therefore the premium is also low. Persons who belong to older age are prone to many diseases, and therefore the risk is high. Because the risk is high, premium will also be high. Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay, I'm telling you with the examples. I will not read each and every line. Otherwise, reading तो आप भी कर सकते हो. अब मैं रीड करने बैठूंगी तो आपको नींद आ जाएगी. एग्जाम्पल बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए. ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे देखो. लाइफस्टाइल, यही सारी पॉइंट्स है ना, नीचे दी हुई है. ये जो सर्कल बना हुआ है ना, चार्ट बना हुआ है, ये सारी पॉइंट्स नीचे दी हुई है. देखो, एज, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. बताती हूँ मैं अभी आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ. लाइफस्टाइल, अभी देखो आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है जिसमें आप है ना बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं
और स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, तो आपकी लाइफ में रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा मतलब, रिस्क ज्यादा मतलब प्रीमियम भी ज्यादा। ज्यादा। वेरी गुड। मतलब आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, आप बहुत ट्रैवल करते हो, ट्रैवल करते हो तो बाहर का खाना खाना पड़ता है आपको, यू नो। सो बिकॉज योर लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोफेशन। अभी आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, आप ना, मतलब आपका ना प्रोफेशन ऐसा है कि आप है ना दुनिया भर के लोगों को ना घुमाने का काम करते हो, ट्रैवलिंग का काम, ट्रैवल एजेंट हो आप, और टूर गाइड हो। टूर गाइड का मतलब क्या होता है, जहां जहां आप पब्लिक को लेके जाते हो वहां वहां उनको सब चीजों के बारे में बताते हो। तो आप बाहर का खाना खाते हैं, आप, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको ऑयली फूड खाना पड़ता है, जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी रिस्की है। अभी आप फैक्ट्रीज को देखो, कंस्ट्रक्शन फील्ड के वर्कर्स को देखो, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको वहां जाना पड़ता है। अब कंस्ट्रक्शन तो बिल्डिंग्स की भी होती है, हाई स्क्रैपर, हाई, यू नो, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स। कितना रिस्क है ना, वो देखा आपने, किसी झूले पे लटक के काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, देखा है? हम्म। यस। हाँ, उनकी जो मशीन्स भी होती है ना वो भी कितनी डेंजर होती है, कभी हाथ अटक गया उसमें तो मतलब दे हैव टू वर्क विथ वेरी, यू नो, विथ अ कॉन्शियस माइंड। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है ना वो भी बहुत रिस्की होती है, मतलब उनका काम ही ऐसा है ना। तो क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में हो तो थोड़ा डेंजर है, तो आप, आपकी लाइफ को रिस्क ज्यादा है। अगर कंपनी बोलती है आपकी लाइफ को रिस्क ज्यादा है जो हम उठाने वाले हैं, तो इसीलिए भाई प्रीमियम भी ज्यादा लगेगा। सो दिस इज नोन एज प्रोफेशन। एक मतलब एक फैक्टर है ये, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर। ये एक फैक्टर है प्रोफेशन, जिसके ऊपर रिस्क डिसाइड होता है, और रिस्क डिसाइड हो गया तो प्रीमियम डिसाइड करना मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम रिस्क पे डिसाइड होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, स्मोकिंग। आपकी हैबिट है, आप ना बहुत स्मोक करते हैं। अभी जैसे शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो, ही इज चेन स्मोकर। क्या बोलते हैं चेन स्मोकर का मतलब क्या होता है? चलो कम ऑन, कम ऑन, यू मस्ट नो दिस। चेन स्मोकर मतलब कंटिन्यू स्मोकिंग, एक छोड़ी दूसरी ले ली। तो आप बताओ, लंग कैंसर होता है ऐसे पर्सन को? लंग ब्लॉकेज हो जाता है, यस और नो? Yes. हाँ, तो स्मोकिंग से क्या होता है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम होती है ना। तो जितना ज्यादा हम स्मोक करते हैं उतना ज्यादा हमको हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। सो हेल्थ इश्यूज ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा, रिस्क ज्यादा प्रीमियम भी ज्यादा। तो आप है ना, अगर देखोगे ना, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका प्रीमियम होगा 8,000, और वेल वेयर एज अगर मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ तो सेम एज भी आपकी सेम है, मेरी भी सेम एज है, आपका भी सेम, एवरीथिंग इज, इनकम आपका सेम, मेरा भी सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, लेकिन आप स्मोकर हो, मैं नॉन स्मोकर हूँ, आपका प्रीमियम होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 8,000, मेरा होगा 4,000। मतलब जो स्मोकर्स है ना वो प्रीमियम डबल पे करते हैं। क्यों? क्यों डबल पे करते हैं प्रीमियम, उनसे डबल, कंपनी उनसे प्रीमियम डबल क्यों लेती है? बोलो। क्योंकि मैम उनको रिस्क ज्यादा रहता है। वेरी गुड, उनकी लाइफ पे जो रिस्क अटैच होता है ना वो ज्यादा अटैच होता है, और मेरी लाइफ को रिस्क ज्यादा अटैच नहीं है, मैं फिट एंड हेल्दी एंड फाइन रह सकती हूँ लंबे समय तक। ओके, दिस इज व्हाई कंपनी चार्जेस देम डबल प्रीमियम। ड्रिंकिंग सेम, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, मतलब मैं बात कर रही हूँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। अगर आप एवरीडे अल्कोहल ले कंज्यूम करते हैं तो आपकी लाइफ को जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, और क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो कंपनी आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करती है। तो वो ही तो, अभी देखो बहुत सारे लोग हैं ना छुपाते हैं कि हम स्मोक नहीं करते, हम ड्रिंक नहीं करते, छुपाते हैं मतलब अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल फॉलो, जल्दी बोलो, फॉलो किया कि नहीं किया? नहीं। नहीं, तो जब कस्टमर ने, क्लाइंट ने अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नल एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नल एंड वॉइड मीन्स नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। इफ यू आर गोइंग टू क्लेम एनीथिंग, कंपनी विल नॉट पे एनीथिंग, बिकॉज आपने बातें छुपाई थी कंपनी से, सच नहीं बोला था ना।
You were not good, you did not follow the principle, you were not faithful to the company. Okay, next, lifestyle choices. आपकी हॉबीज हैं, जैसे कार रेसिंग करना, और बड़े बड़े ट्रेचरस माउंटेन्स को, माउंटेन के पीक पे जाना, मतलब क्लाइंब करना, या फिर वो ट्रैकिंग नहीं बोलते हैं, ट्रैकिंग पता है क्या होता है? क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग पता है क्या होता है? माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना हम ट्रैकिंग करके, बताओ डेंजरस है ना वो। कार की रेसिंग ले लेना, स्पीडी कार की, बाइक रेस पे चले जाना, ये आपकी हॉबीज हैं। तो थोड़ी जो एडवेंचरस हॉबीज होती है ना, उसमें लाइफ में ना रिस्क होता है। मैं क्या बोल रही हूँ? एडवेंचरस हॉबीज। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग इज नॉट एडवेंचरस हॉबी, वेयरएज क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ट्रेचरस माउंटेन्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं खतरनाक, जिनके नीचे वैली होती है, गिरेंगे तो बचेंगे नहीं, ट्रेचरस माउंटेन्स। कार की रेसिंग में चले जाना, बाइक रेसिंग में चले जाना। सो आजकल आपने वो देखा होगा, वो टीवी सीरियल्स में, सॉरी, आपको इसमें दिखाते हैं ना टीवीज में, जैसे रोडीज करके, रोडीज देखा है? रोडीज करके। यस मैम, रोडीज एक्सट्रीम। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही हाँ। बहुत सारे, वैसे ना बहुत सारे आपको मिलेंगे टीवी ऐसे सीरियल्स, जिसमें ना उन लोग है ना, मतलब जो इनवाइटीज होते हैं ना, उनको एडवेंचरस चीजें करने के लिए बोलते हैं। तो वो लाइफ में रिस्क ज्यादा अटैच करता है ना, मतलब माउंटेन से नीचे जंप करके एंड देन आपको लटकना एक जगह पे, ऐसी डेंजरस चीजें करने के लिए बोलते हैं। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस मैम। यस मैम। आप वो रोडीज जैसे जो सीरियल्स चलते हैं वो देखेंगे ना अगर आप, तो आपको समझेगा। तो अगर जिनकी हॉबीज है ना ऐसी एक्टिविटीज करने का, ऐसी कोई हॉबी है जो थोड़ा एडवेंचरस है, जो थोड़ा डेंजरस है, उनकी लाइफ को रिस्क ज्यादा अटैच होता है। तो क्योंकि आपकी अगर ऐसी हॉबीज हैं, आप ऐसे करते हैं, और अगर आप प्रीमियम भरते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो या जनरल इंश्योरेंस लेते हो, तो आपको बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल चॉइसेस, सॉरी लाइफ, ये तो ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही बात चल रही है, तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी? व्हाट इज ओबेसिटी? आपका हेल्थ जो है, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। तो देखो, जब हमारा जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ सकता है। ओवर ओवर जो हेल्थ होती है ना, जो वेट होता है किसी ह्यूमन बीइंग का, तो वो एक जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो ओवरवेट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो डील कर सकता है एक टाइम पे। तो रिस्क अटैच ज्यादा हुआ उसकी लाइफ में बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, एंड बिकॉज ऑफ ओबेसिटी रिस्क ज्यादा, मतलब प्रीमियम भी ज्यादा। Yes, so these were the points. I will just repeat the points once again so that you understand and remember the points. Determinants of risk premium: age, lifestyle, profession, smoking, drinking, lifestyle choices, मतलब जैसे हॉबीज आपको मैंने बताई, जो एडवेंचरस चीजें, एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करते हो खुद को, और ओबेसिटी। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे आपका रिस्क प्रीमियम कंपनी डिसाइड करती है। ओके, एनी डाउट अप टू हियर? एनी नो डाउट? मैम। ओके। प्रीमियम क्या होता है? पेमेंट ऑफ प्रीमियम मतलब, प्रीमियम मतलब क्या होता है? जब कंपनी आपका रिस्क उठाने के लिए रेडी होती है, तो फ्री में तो नहीं उठाएगी आपका रिस्क कंपनी। फॉर दैट कंपनी इज गोइंग टू चार्ज यू सम अमाउंट, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। वेरी सिंपल, बस वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ो समझेगा। आपने एक ना 20 इयर्स की एंडोवमेंट पॉलिसी खरीदी थी, जिसके लिए आपका गिवन एज के हिसाब से, मतलब समझो आपका 30 इयर्स का एज है, 40 इयर्स का एज है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट बैठता है 4800। तो आप कंपनी को जो 4800 हो ना, वो एवरी ईयर पे करते हो 20 इयर्स तक, क्योंकि आपकी पॉलिसी 20 इयर्स की है। समझ में आया? रिबेट प्रीमियम समझ में आया सबको?
यस जल्दी मैम। बोलो। रिबेट ऑन सम अश्योर्ड। अभी रिबेट का मतलब क्या होता है ना, जब आप बहुत बड़ा अमाउंट है, सपोज अभी एग्जांपल ले लो, 50 लाख की पॉलिसी और 50,000 का प्रीमियम है, ठीक है ना। अब 50,000 अगर आप एक साथ पे करते हो ना, ऑल टुगेदर, तो आपको कंपनी ना थोड़ा डिस्काउंट देती है। बोलते हैं ना, एडमिशन फीस अगर एक साथ पे करोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो पूरा पे करना पड़ेगा। सुना है, बहुत जगह रूल होता है ये, सुना है कि नहीं? यस। तो जो हायर वैल्यू होता है ना, अगर आप एक साथ पे कर देते हो ना वो, तो आपको अच्छा खासा रिबेट मतलब डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। रिबेट ऑन मोड ऑफ प्रीमियम, अगर आप ईयरली पे करते हो तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, हाफ ईयरली पे करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट कम मिलेगा। मतलब मोड कैसे है, आपका प्रीमियम कैसे पे करने वाले हो, हाउ आर यू गोइंग टू पे द प्रीमियम। इफ यू आर गोइंग टू पे एनुअली, रिबेट आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगा। हाफ ईयरली, देन द रिबेट विल बी लिटिल स्मॉल। क्वार्टरली, देन स्टिल योर प्रीमियम विल रिड्यूस, एंड मंथली बेसिस पे तो शायद ही कोई रिबेट मिलता है। हाँ, पर कंपनी आपको अलाउ करती है मंथली बेसिस पे आप प्रीमियम पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा चार्जेस तब लगते हैं जब आप टाइम पे प्रीमियम नहीं पे करते, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस तब कंपनी आपके ऊपर लगाती है। और एक्स्ट्रा चार्जेस कब कंपनी कब कब लगाती है, जब आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, मतलब पहले नहीं थे पर अब हो गए, तो अभी थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा। 3 साल तक तो डायबिटीज नहीं थी पॉलिसी जब खरीदी, लेकिन अब हो गई, तो कंपनी थोड़ा प्रीमियम बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ पे रिस्क बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे ना, तो कंपनी वैसे डिसाइड करती है प्रीमियम। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। डिटरमाइनिंग द प्रीमियम, कैसे प्रीमियम डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स? कंपनी प्रीमियम डिसाइड कैसे करती है? मॉर्टेलिटी पे, मतलब कितने साल तक एक पर्सन जिएगा, अलाइव होगा, और कब उसकी डेथ होगी। अब ये तो पता नहीं कब होगी, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं हेल्थ को देखकर। एक फिट एंड फाइन पर्सन है और एक डायबिटिक पर्सन है, तो अंदाजा लगाते हुए हमको ये पता लगता है कि अच्छा, जो डायबिटिक पर्सन है उसकी लाइफ थोड़ी छोटी है, और जो फिट एंड फाइन है उसकी लाइफ थोड़ी लंबी है। देखो, फिर उल्टा भी हो सकता है, वो इट इज द डिवाइन डिसीजन दैट, कि मतलब कब किसी की डेथ होगी वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, बट कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक फिट एंड फाइन पर्सन है और एक डायबिटिक पर्सन है तो किसकी डेथ पहले होगी। सो दैट इज नोन एज मोर्टालिटी रेट। Okay, next is interest. How much interest are you going to charge for the particular risk that you are taking? Expenses of management. कंपनी को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड, उसका भी खर्चा आप प्रीमियम से ही निकालते हैं। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। रिजर्व्स, कंपनी हैज टू कीप समथिंग in reserve so that if emergency comes you are able to pay. And bonus loading, you always remember, in the case of life insurance, at the maturity date or on the death of an insured, there is an amount of bonus that company pays to the party. So that bonus is also taken out of the premium only. That premium is saved and invested somewhere, and from the invested amount there are certain profits that company earns, and from that profits bonus is to be calculated. Some part of the profit is to be distributed in the form of bonus at the maturity or on the death of insured. Who is insured? One is insurer and the other party is insured. Insurer means company and insured means client. Okay, so these points are explained with the help of examples. You can go through, and we are left with one more part of the chapter, the last part, policy procedures and documentation. That's going to take only 5 minutes for me. Just hold on, okay?
Students, I think only 2 minutes will be, enough for me. See, policy, procedures and documentation. जब हम पॉलिसी खरीदने जाते हैं ना कोई, तो सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं. फॉर्म जो डिटेल नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, एज के बारे में आपसे पूछता है. वो फॉर्म सबमिट जब हम करते हैं ना, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन लेता है हमसे. मतलब जब कंपनी हमसे मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, दैट हमारा आई चेकअप होता है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और डॉक्टर से अप्रूव किया जाता है, इन शॉर्ट कि पेशेंट की हेल्थ, क्लाइंट की हेल्थ ठीक है. ओके, दैट इज नोन एज मेडिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज स्क्रूटिनाई एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. अगर सब अटमोस्ट गुड फेथ एंड एवरी प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड, तो ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं. एंड लास्ट, पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ द पॉलिसी. जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज आप पहला प्रीमियम पे करते हो और आपको उसके लिए क्या मिलता है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है. मतलब अब से पॉलिसी शुरू हो गई. डिड यू गेट दैट? Yes, ma'am. That's it. Okay, so my chapter is over, students. Okay, any doubts so far? These are some MCQs and some questions given below. You can refer it for your papers. So any doubts, if you have, we can clear it out in the next lecture. You just give it a read to whole chapter, and then in case you have any doubts, we can clear it out. Okay? Yes, ma'am. Okay, just give it a read. Okay, I've stopped my sharing. Shall we call of the day? Yes, ma'am. Okay. Bye everyone, take care. Next chapter we will start in the next lecture. Okay, ma'am. Bye. Yeah, Okay. bye. Bye.